साहिल को ओके। हाँ, लाइव करने से पहले एक बार बता देना सर। हाँ। सर पेपर एक्चुअली, हाँ, आई गेस वी आर लाइव. Hello guys, very very good afternoon to all of you. Welcome back. SEBI Grade A Phase 2 Paper 2 and the Phase 2 examination is over now. So bit surprising if you compare with the last few year examination. So we have Prakash sir with us. So we'll be discussing around the areas and we'll come up with a detailed analysis also. First of all, like when it comes to the overall areas, what I found or what feedback we got from the candidates, those who have given this particular examination, the paper level was moderate to difficult side. Basically, there was very less number of numericals when it comes to accounting and costing. And what I get, like even the ratio analysis also this time, they ask theoretical aspect or the fundamental aspect. And when it comes to the other areas, like when it comes to management, so there was many questions aapka which was application based, like let's say they have given small case studies, then they are asking to find out the leadership style as well as uh, apart from this, like from the costing, what I can see, lean costing dominate the paper. In phase one also there was three question around the lean costing. Here also there was a question around the cellular manufacturing, or there was questions around Kaizen, or there was questions around the costing or the other areas, the implications and all. There was one question around the variable analysis also, labor cost variable analysis. That was very easy one, but very less number of questions based on numerical. Mostly the paper was fundamental driven. If you know the concept well, then only you will be able to solve those particular areas. So kahin na kahin concept clarity and the application of those particular concept and kind of the small case studies, set of case studies, that was generally part of this one. हाँ, difficult था बिल्कुल, except this particular one. Even like see, सेबी का कुछ standard है. If you compare with the previous year examination, तो बहुत easy level पे आपका होता था phase 1 as well as phase 2. But this time they have changed the game. Even phase 1 also, that was at difficult side. Phase 2, there are two major reasons. There are people, those who are working, आपका preparing for the PFRD examination, they'll feel this particular one bit easier side, because this is the fourth time they are going to deal with this particular curriculum itself, right? So we'll come to the basic analysis first. Prakash sir with us. Prakash sir, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, अब क्या है पेपर का लेवल इन अदर्स. Right, sir. So, hello, guys. So, finally, the phase 2 of SEBI grade examination is over. But this year's examination was really shocking, right? Because यहाँ पे the weightage has been more given to the statement-based questions, the numerical questions तो कम आए थे, but जो भी आए थे वो काफी difficult आए थे. तो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल बात करूं इकोनॉमिक्स एंड कंपनी लॉ की, तो इकोनॉमिक्स तो डिफिकल्ट था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, सो कंपनी लॉ डुएबल था, राइट? इफ वी कंपेयर with the previous year, थोड़ा बहुत difficult था, but yes, that was doable. So if you are someone who has prepared this component well, so आपके लिए चीजें easy रही होंगी. कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली, इकोनॉमिक्स में नो डाउट पेपर वाज डिफिकल्ट, राइट? अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूं, स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स फर्स्ट. सो पहली बात तो ये जो पूरा पेपर था, पूरा कंपोनेंट था इकोनॉमिक्स का, दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स. न्यूमेरिकल्स, दो लिमिटेड न्यूमेरिकल्स थे, बट द न्यूमेरिकल्स दैट वर आस्क्ड, दे वर लिटिल बिट डिफिकल्ट. काफी इन डेप्थ पूछे गए थे, काफी टाइम कंज्यूमिंग थे, लेंदी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है जी. एंड इवन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे डिमांड एंड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से भी क्वेश्चन आया था, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे वहां पर पूछे गए थे, ठीक है. तो जो हम पहले ऑब्जर्व करते थे इन द प्रीवियस ईयर सेबी फेज 2 एग्जामिनेशन के, डायरेक्ट क्वेश्चंस यूज्ड टू बी आस्क्ड, बट नाउ दिस ईयर दे हैव नॉट आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, दे हैव गिवन मोर वेटेज टू द मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज द यू कैन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी आए थे, ठीक है. आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी हमने ऑब्जर्व किया है इस बार, ठीक है. सो जो जनरली सेबी में वो चीज नहीं होती है, बिकॉज सिलेबस इज क्लियरली डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड, बट सेबी में चीज हम बहुत कम रेयरली ऑब्जर्व करते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाएं. बट दिस ईयर दे हैव आस्क्ड आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन एज वेल इन द इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स जो थी वो बेसिकली जनरल स्ट्रीम की लग ही नहीं रही थी, वो लग रहा था कि आपसे मास्टर्स डिग्री का जो नॉलेज है वो दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग. तो उस लेवल पर चीजें पूछी गई थी. यस, देयर इज नो डाउट इकोनॉमिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर. और जो हम ट्रेंड देखते आ रहे थे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आईएस एंड एलएम कर्व जो था, आईएस एलएम कर्व, वहां से फेज 1 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फेज 2 में भी नहीं पूछा गया, ठीक है। सो वी यूज्ड टू थिंक यार आईएसएलएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एवरी टाइम, बट दिस ईयर दे हैव नॉट आस्क्ड neither in phase 1 nor in phase 2, and that shows कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एक सेट पैटर्न जो है वो सेबी नहीं रखना चाहता है, कि जो हम जनरली बोलते हैं कि these are the most important topics that you have to cover, these are the least important topics, तो वो चीज शायद अब यहाँ पर सेबी उससे ऊपर आ चुका है, सेबी is making all the topics important and that is why they have changed little bit here. कुछ क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, तो एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू मार्केट प्राइस दैट वाज गिवन एंड यू नीडेड टू कैलकुलेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो ये तो आप कर लेते हैं आराम से, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आया था, दैट वाज डिफिकल्ट। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, गाइस राइट नाउ वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट क्वेश्चन। जो हमारी बात हुई है स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पर यहाँ पर हम इनिशियल रिएक्शन का जो एनालिसिस है वो आपके लिए लेकर आए हैं। विल कम अप विद द डिटेल्ड वीडियो एज वेल, डोंट वरी, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सो इफ यू नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन प्लीज डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स, ताकि चैट बॉक्स को हमें ये भी पता चल सके कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स को कंक्लूड करूंगा, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनी लॉ की बात करें, सो कंपनी लॉ वाज डूएबल एज आई टोल्ड यू, ठीक है। 2 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि होते हैं, और मैंने आपको बताया भी कि सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं सेबी के कंपनी लॉ वाले कंपोनेंट में। यू नीड टू रिमेंबर द सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो यस, वो भी पूछे गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आल्सो देयर कंपनी लॉ में। तो कंपनी लॉ तो ट्रेंड पर ही था, जिस ट्रेंड पर चलता आ रहा था उसी ट्रेंड पर था। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ सेवियर कि आपके अदर कंपोनेंट्स भी अगर डिफिकल्ट है तो यहाँ पे कंपनी लॉ आपकी हेल्प करता। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जहां पर 4-5 यू कैन से fill in the blanks थे एक सिंगल क्वेश्चन में, and there you needed to basically fill those blanks. Dividend account से related कुछ क्वेश्चन था, I do not know the exact question, so I need to collect more questions so that we can give you the proper analysis. तो अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ was around you can say moderate level पर था, ना ही easy ना ही difficult, that was doable, ठीक है। So this is all from my side for economics and company law. Now we'll move to the Mahesh sir, so ताकि rest of the components के बारे में बता सके। Yes, yes. So see guys, like as of now what we know, like जितने भी कैंडिडेट आपका बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और जो इजी साइड है वही याद रहता है, ठीक है। बट एवरीवन नो कि द पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड। देयर इज सम एग्जामिनेशन, जैसे अगर कोई बैंकर्स होगा, सो इफ दे हैव गिवन सम एग्जाम लाइक सीआईबी, तो दिस इज समथिंग व्हाट दे हैव डिजाइन, राइट। तो वहां पे भी यू विल गेट मैक्सिमम आपका केस स्टडीज, आपका दे विल गिव मल्टीपल केस स्टडीज इन वन क्वेश्चन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीजें आपका देखने के लिए मिली। The good thing about this particular paper this year is the phase आपका paper 1, which is English descriptive, comparatively it was at easy to moderate level. Last year when it comes to 24 examination, that was the most challenging paper. तो वहां पे सबसे ज्यादा चैलेंज होते क्योंकि phase 2 paper 2 was आपका at easier level, but इस साल आपका वो सही रहा है, ठीक है। दूसरा what I'm getting ना, like this, so see those who have studies well for PFRD as well as आपका SEBI grade examination, सी आपको यहाँ पे ना कोई ऐसा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। इफ यू हैव वर्क हार्ड और बहुत अच्छे से आपने चीजें करी हैं, द कट ऑफ विल बी एट लोअर साइड, डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी एट लोअर साइड, तो दैट विल हेल्प यू इन दैट केस। एंड लाइक लेट्स से जैसे कुछ लोग आपका दे हैव स्कोर अप टू 86 आल्सो, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, बट लाइक सी the things are like this, say just a minute, I got some detailed question also, okay. So when it comes to, there was a in finance portion, there was a question around the fixed and floating rate, and the deficit related question was also there, sir, and NNP calculation was also there, okay. And financial investments related questions, 2 questions was there, okay. National income, there was a question, okay. And ebook and basic bank science, and we have Maslow's hierarchy of need. So there were multiple questions given around that particular questions, and they have asked the basic kind of case studies and all. GST, IGST, CGST, SGST related question were also there. Fiscal policy, 4 statement based question was there, and apart from this, there was question regarding storming, forming, and others, and there are some statement आपका related questions on the forex or something, okay. So these were the areas, like see the question paper was entirely based on the fundamental aspect. If you have read things well, if you have practiced well, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे लगेंगी, खाली कॉन्सेप्ट से नहीं बल्कि
similar set of questions अगर आप लोगों ने practice किए तो that will help you. जैसे निरंजन sir is saying आपका कि like the question label was like kind of statement driven in others, so that is आपका the things, and that will kind of like tough है तो सबके लिए थोड़ा सा कट ऑफ पे आपका जो एरियाज रहेंगे that will be कहीं ना कहीं that will be at lower side. दूसरा callable bonds, ठीक है, optionality in bonds आपका there was a question based on that particular one. फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस, ठीक है, जैसे सिद्धार्थ सर ने आपका मेंशन किया, ठीक है, so there was a question around the future and others. आपका ITC, आप how many questions and others, there was areas. Expected cutoff के ऊपर बात करेंगे later on, ठीक है. Social media influence on elections आपका, that was as a topic. Okay, thank you so much Niranjan sir. So that was easy side आपका. Again, if it comes to the accounts, ठीक है, put back limit, buyback limit, majorly this is the question. Securities premium can be unlisted for the what purpose? Or FPI, FDI related one question was there. Money multiplier, national income, management, smart approach, aapka that full form for the planning things. Leadership style with case studies, Maslow's need theory with case study, and Companies Act also. So what I interpret this particular one, it is not out of the syllabus. For especially for accounting, costing, and management, things are the related which are generally given in your keyword itself. The only thing is you have to understand the conceptual understanding to solve these kind of multiple statement based question or the case studies itself, right? So that is something which is the core of this one. So that means if anybody who are planning for the upcoming years and all, concepts are the key. So you have to work on those particular one, and those who are given this time, obviously this cutoff will come at down lower side. Okay? So it depends on how like the overall score as well as the accuracy with those particular questions, right? So we got many things after him. Gave a PFRT as well. This paper was okay. PFRT, PFRT was kind of a warmer for all of you, right? So PFRT और इसका syllabus almost same है आपका. तो वहाँ पे like why I told you कि you are meeting with same set of curriculum for the 4th time. PFRT में 2 बार आपने देखा, then फिर SEBI phase 1 के अंदर, then SEBI phase 2 के अंदर. तो that's why the competition is also very high. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ये टफ लगा है, कुछ लोगों को मॉडरेट भी लगा है, और चीजें कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आपने अप्रोच लिया. ठीक है, अगर आप PYQs के बेसिस पे थे, उस हिसाब से प्रिपरेशन किया तो थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाली है. बट हाँ, PYQs क्योंकि काइंड ऑफ इररेलेवेंट हो चुके हैं आपका सेबी के एग्जाम्स को अगर हम देखें, फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए भी. चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अच्छा होगा. जितना भी स्कोर किया वो डिपेंड करता है आपका ओवरऑल स्कोर के ऊपर. वंस सब लोग अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे तो विल स्पीक टू द कैंडिडेट एंड विल कम अप विद द डिटेल एनालिसिस आल्सो कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे और कहां पे आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने के लिए मिले. प्रकाश सर, ओवर टू यू. यस सर. सो गाइज देखिए, सारी चीजें आपको पता है, आपने एग्जाम्स दिए हैं, क्वेश्चन कैसे आए थे आपको पता है, ठीक है. द थिंग इज की पेपर वाज डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर. इंपॉर्टेंट थिंग इज कट ऑफ डेफिनेटली कम रहेगा. कितना रह सकता है, वी विल कम अप विद द वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट. ऑल्सो अनदर थिंग कि यहाँ पे आपको एक मेजर ट्रांजिशन ऑब्जर्व करना है, दैट रेगुलेटरी एग्जाम इज नो मोर, यू कैन से क्रैमिंग एग्जामिनेशन, जहां पर आप चीजों को क्रैम कर रहे हैं, यू आर मगिंग अप द कंसेप्ट, राइट. आपकी यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जा रहा है, आपकी कंसेप्ट पर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जा रहा है. सो दिस इज नो मोर एग्जामिनेशन जहां पर आप सिंपली चीजें रट्टा लगाकर एग्जाम को क्लियर कर लेंगे. तो वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. सो यू नीड टू फोकस ऑन कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स रियली वेरी वेल, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन. तो अगर आपकी अप्रोच ये है कि मैं चीजों को याद करके एग्जाम में अपेयर हो जाऊंगा, so max to max you can clear phase 1 of that particular examination, phase 2 नहीं चल पाएगा. so better है कि अभी से उस चीज पर फोकस करिए, जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वहां पर फोकस करना है. अभी क्रैमिंग वाला पोर्शन जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से कहीं ना कहीं दूर जा चुका है, ठीक है. सो हाँ सर, आई गॉट फ्यू अदर क्वेश्चन आल्सो. एक्चुअली जिन्होंने 86 स्कोर किए हैं तो शी इज सेंडिंग दिस क्वेश्चन कि देयर वाज सम क्वेश्चन अराउंड द इन्वेंटरी वैल्यूएशन आल्सो, राइट. And there was a numerical basically on the your inventory valuation, and the method which we have to use as per accounting standard, and we just have to give the value itself. The another one was which was a kind of a repeat question. It was get asked in last year also. That was related to labor variances. So standard and actual was given some 500 units and the actual is 475. The standard labor charge was 22.20.
and 2.20 and the actual was 2. So it's a profitable situation. It's a situation of आपका positive level variance, means your answer should be in positive in others, right? So things like, see, what I can देखो एक सेबी के एग्जाम का वो बना था ना कि धारणा की नोशन जो है कि यार पेपर इजी आता है, वो ब्रेक हो चुका है. दूसरा इतना टफ नहीं है, मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड चीजें आपकी बहुत ज्यादा थी एग्जामिनेशंस के अंदर, तो दैट इज समथिंग, और टाइम कंज्यूमिंग है. यू हैव टू, मतलब वो फोकस जो एरियाज आपके आते हैं वो कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो इस लेवल का मल्टीपल केस स्टडीज के साथ, जहां पर आपको फॉर ए विच टाइप ऑफ लीडरशिप, बी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, या मैस्लोज हायरार्की में जिनका जो डिफरेंट नीड, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, स्टैटिक है क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते. हाँ, उनका एप्लीकेशन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पे आपका टेस्ट किया गया. सो यस, हाँ, आपका इन कंपनीज लॉ देयर वाज अ क्वेश्चन, unpaid dividend accounts related question was there, sir. And हाँ, ठीक है, तो ये कुछ आपका एरियाज हैं. तो we'll speak to these particular guys, those who have given the examination, and we'll come up with a detailed analysis also, so where we will be going through those particular questions and try to make an analysis. And this is it from my side, guys. So Prakash sir, anything you want to add? And wish you all the very best for your result, guys. Yes, only one important thing, guys. If you know the question, right, so please mention in the comment box, right, chat box, so that we can get to know. So यहाँ पे we can provide you the better analysis, ठीक है? Because you guys have appeared for the examination, you know it very well. So simply आपको जो भी questions याद है किसी भी component के, just please type it in the chat box, comment box, so that we can get to know. And उसके बाद हम cross check करके we'll come up with the detailed video. Guys, thank you very much. This is all from our side. We'll meet you in the next video. Take care. Goodbye. Take rest. आराम से. टेंशन नहीं लेनी है, चिल करिए, ठीक है? एग्जाम हो गया, अब आराम से रिलैक्स करिए गाइस. आपने बहुत मेहनत की है पिछले 2-3 महीने में, आराम से रिलैक्स करिए. दैट्स इट. बाय बाय गाइस, टेक केयर. Okay, thank you, all the best, guys.